Thank you very much for those kind words. Uh, Good morning, everyone. Namaskar. Suprapadam. Uh, Welcome to the newsnext conference, and thank you very much for inviting me to deliver this keynote address. First of all, before anything else, I want to give my greetings and a very happy birthday to Anurag Batra. It's his birthday today. The driving force before e4m, who's continued to grow it in various directions and dimensions quite incredibly. So it's a great way to start the day, wishing someone a happy birthday, to him and his entire team uh, who bring this event out every year. I think they deserve a big applause for putting it together year after year. I remember meeting Mr. Batra's colleague Priyanka in Mumbai last week, and I kept asking her, when is your news next event? Isn't it going to be held this year? She said, no, no, sir, it is being held. So it's become an annual date on the calendar of journalists, and I think Mr. Batra and his team deserve huge credit for that. मैं थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलूंगा, क्योंकि जमाना बदल गया है और हिंदी का जमाना है, और उसके साथ भी अंग्रेजी में जरूर बोलूंगा, लेकिन I find that I do a program called नेता नगरी on ललन टॉप, और आप देखेंगे कि उस प्रोग्राम की जो दर्शक है, आप कहीं भी उत्तर प्रदेश बिहार में जाइए, छोटे से पुलिस अफसर से मिलिए, वो नेता नगरी देख रहा है. एंड दैट इज द पावर इन अ वे ऑफ द न्यू मीडिया एज वेल एज ऑफ हिंदी लैंग्वेज. लेकिन उसी के साथ ये कहूं कि डोंट थिंक दैट इंग्लिश इज डेड. वी डू अ पॉडकास्ट एट द मोमेंट ऑन द वर्ल्ड कप कॉल्ड वर्ल्ड कप रिवाइंड, एंड वी जस्ट डिड इट एज अ as fun. Last week हमारा जो वर्ल्ड कप रिवाइंड का पॉडकास्ट था वाज नंबर 1 अक्रॉस इंडिया इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली ऑन द वर्ल्ड कप. So you have a country where you have a variety of languages, and this is the greatness and the opportunity that lies in the ability to perhaps go across languages and build bridges between languages. I've chosen this topic about TV journalism and the 3 C's because wherever you go, लोग कहते हैं टीवी जर्नलिज्म तो खत्म हो गई. I was at a funeral last week, a very sad occasion, and with me was Rajat Sharma, a senior doyen of this medium, and we were in a corner when a lady comes up to us and says she wants to take a photograph with us. First of all, it seemed very awkward to take a photograph at a funeral, but वो selfie का जमाना है, वो प्रधानमंत्री से शुरू होता है, तो somebody wanted a selfie there. अब selfie ले ली, and then the lady turns to us and said, आप जानिए मैं टीवी न्यूज नहीं देखती. टीवी न्यूज is dead. You see, the interesting part is everybody says it has become a fashion. TV news is dead. लेकिन सब टीवी न्यूज देखते हैं. The fact is, if you look at any social media video, you look at trends that come on Twitter, most of them are based on what is happening on TV. तो ये बड़ा आसान होता है और बड़े लोग बड़े खुश होते हैं ये कहने में कि टीवी न्यूज तो खत्म हो गई है. But as Mark Twain said in another context, reports of my death are grossly exaggerated. ये बड़ा आसान है कहना कि टीवी न्यूज खत्म हो गई है, लेकिन the reference point for social digital media is TV news even today. What is said on TV news becomes clip videos that go viral. So therefore, TV news is not dead. But TV news is in ICU. Please get this right. TV news is not dead. Far from it. But TV news is in ICU. Because TV today faces challenges of a kind that perhaps were not visualized when we started this 24/7 TV revolution 25 years ago. What is this crisis that TV news faces? I have identified 3. We could talk about many more, but I will only talk on these 3 because of limited time. The crisis, the 3 C's: commerce, content, conscience. Commerce तो हम जर्नलिस्टों के हाथ में नहीं है. Commerce is in the hands of people like Dr. Batra, Vineet Jain, and the others who own these platforms. The fact is, the business model of TV news as we knew it has broken down.
हमने जब टीवी न्यूज शुरू की 25-27 साल पहले, अर्ली 90s, there were hardly any players. In fact, till the 2000s, we had only 5 or 6 24 by 7 news channels in the early 2000s. Today, there are 397 registered 24 by 7 news channels across India. In languages like Telugu alone, there are more than 20 24 by 7 news channels. And so in Hindi. The cake has remained the same, but the competitors for that cake have increased in multiple times. और उसी वजह से जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू की जो बढ़त है, compared to the number of claimants for it, there is a shrinking market. The truth of the matter also is that people with very deep pockets have come and taken over TV news. And उनको तो थोड़े पैसे में you can get landing pages, you can work in a manner that you can virtually rig the ratings of Bark. Who is it? Let's be honest. Let's in a gathering like this, we must have the courage to be able to call out the elephant in the room. आपको वाकई लगता है कि the rating system as it exists today is clean, transparent, or it cannot be rigged? Then people who have thousands of crores in their other businesses just choose to put a few hundred crores in a news business. How do you then create a commercial model that is viable and transparent? How do you actually ensure that news gathering is where you invest your money, or do you cut back? एक जमाने में हम लोग न्यूज पे इन्वेस्ट करते थे, आज हम लैंडिंग पेजेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. वही बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या जो मीडिया बैरन्स हैं, if they had invested the same amount in news gathering as they do in landing pages, we would genuinely feel we would have a better media. अब Jeff Bezos invests in a Washington Post to improve the quality of Washington Post. यहां आप इन्वेस्ट करते हैं आपके कंट्रोल के लिए, आपके इन्फ्लुएंस के लिए. Now, you and I as journalists have no control over this. तो ये क्राइसिस ऑफ कॉमर्स एक तरह से आपकी और हमारी परेशानी नहीं है, ये इन बड़े बड़े मीडिया बैरन्स और उद्योगपति की है. And I leave it to them to decide how they want to settle this crisis of their commerce. दूसरा जो क्राइसिस है, दूसरी जो सी है, और मैं एक्रोनिम यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी पसंद करते हैं एक्रोनिम्स, तो मैं भी 3 C's करूंगा. वो जैम करते हैं, जन धन, आधार, मोबाइल, तो मैं कह रहा हूं 3 C's. नंबर 1 कॉमर्स, नंबर 2 कंटेंट. कंटेंट जो है, मुझे अभी याद है 95 में मैं एक बड़े बीबीसी के ब्रॉडकास्टर को मिला था, जेरेमी पैक्समैन, one of the great broadcasters of his generation. And he told me this, and today it's absolutely true. He said, the day you start 24-hour news, you will have a crisis of content. क्योंकि ये जो जानवर है उसमें डालोगे क्या 24 घंटे? कितनी खबरों को रिपीट करोगे, कैसे करोगे? That crisis has even worsened in times because commerce is dictating what you want to put as content. So where you first send your reporter to anywhere in the country, आज स्टूडियो में ही कर दो. Ensure low cost content for high ratings. कि किस तरह से हम लो कॉस्ट में कुछ व्यूअर को अपनी तरफ कर सकते हैं. एंड सो वी स्टार्टेड व्हाट आई कॉल खिड़की जर्नलिज्म. पहले तो 2 लोग खिड़की में थे, फिर 4 हो गए, और एक दिन आएगा वह रावण स्कूल ऑफ जर्नलिज्म आएगा जहां 100 चेहरे आपको दिखेंगे, और वही चेहरे एक बंदर की तरह एक स्टूडियो से दूसरी स्टूडियो में जाते हैं, not offering anything really new to the viewer, not offering knowledge, but offering a bit of drama. So what was meant to be about news and information became about what I call infotainment. And that transition has taken place, and that has created what I call the crisis of content. But let me tell you this, that is a wrong way to look at TV news, because TV news has huge capacity to actually influence minds and make a genuine impact with its content. And I'll give you examples. Just 2 weeks ago, Noor mein, there was a terrible riot whose backlash was witnessed in Gurugram.
और एक मामूली सा इंसान की दुकान जलाई गई और वो रास्ते पर था विथ नो वन टू टर्न टू। हमारी रिपोर्टर वहां पहुंच गई थी, सॉ दिस, put the photograph on social media, then interviewed the boy, we put the story on TV. Within an hour of that story, एक घंटे में उस स्टोरी का इतना इम्पैक्ट हुआ कि उस बंदे को एनजीओ साथ मिलकर उसकी दुकान उन्होंने फिर वहां बनाई है गुरुग्राम में। यह है टीवी का इम्पैक्ट। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। एक हॉकी प्लेयर पंजाब का, नेशनल हॉकी प्लेयर था, उसकी नौकरी चली गई थी, उसको नौकरी थी नहीं और वो मैन्युअल लेबर कर रहा था। वो स्टोरी चली, टीवी पर बराबर चली। भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल saw the story. Within one day, that person has got a job in Punjab. That is the impact of TV. Few weeks ago, topper from Bihar in the 12th standard exam, उसके फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। वो टीवी पर आती है और कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कॉलेज की फीस मैं कैसे दूंगी, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूं। A minister in Goa, Vishwajit Rane, saw that story. He has virtually adopted her, given her scholarship. She is now going to one of the best colleges in the country. She will probably get her IAS deemed realized. That is the power of TV. तो ये जो क्राइसिस ऑफ कंटेंट है ना, ये क्राइसिस ऑफ कंटेंट डिपेंड्स, ये क्राइसिस ऑफ कंटेंट की बात कौन कर रहा है। वही लोग जो कहते हैं कि टीवी न्यूज खत्म हो गई है, कहेंगे क्राइसिस ऑफ कंटेंट है, आप देखेंगे टीवी, पर आप नहीं जानते कि उस टीवी का इंपैक्ट हो सकता है। If you do the right story, it's not a crisis of content, it's a crisis of doing the right kind of content that will have an impact on people. You can make a difference if you do the right kind of story. You have a choice. You either do stories impactful like this, या आप करिए जो मैं कहता हूं, what has become a trend, the ANization of news. With due apologies to ANI, which does a very good job. The fact is, वो सुबह जाके किसी का बाइट लेते हैं, वो बाइट पूरे दिन चलता है, उसके ऊपर आप डिबेट करते हैं और आप खुश रहते हैं। At one stage there was the McDonaldization of news, जहां आप न्यूज फास्ट फूड की तरह कर रहे थे, अब वो ANization of news हो गई है। Your choice is, do you want the ANization of news or do you want content that can make a difference to people's lives, as I have said in these examples before you. TV news can make a difference to make the world a better place. It is still the most impactful medium, particularly when it is live, particularly when there is a big story. Number 3, and the final thing, is the crisis of conscience. आत्मा जो होती है, ये बड़ी इंटेंजिबल चीज है। लोग कहेंगे आत्मा का मतलब क्या है, बट लेट मी टेल यू दिस, उसका एक ही जवाब है। जब आप एक सवाल अपने आप से पूछोगे या किसी से भी पूछोगे, आप जर्नलिस्ट बने क्यों, आप पत्रकार बने क्यों, अगर उस सवाल का आपको जवाब मिलता है, आपको इस क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का भी जवाब कहीं मिलेगा। Did we become journalists only to peddle official propaganda of whichever is the government of the day? Did we become journalists to become the overground mouthpieces of social media, IT cells of political parties? Did we even worse become journalists to peddle hate and bigotry in this country? क्या आप नफरत फैलाने के लिए पत्रकार बने या लोगों को जोड़ने के लिए पत्रकार बने? This is where we should press the pause button. एक हिंदी में वर्ड है ठहराव। आजकल कोई ठहराव नहीं होता। आजकल हम एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी पर जाते हैं और सोचते नहीं है उस स्टोरी का इंपैक्ट क्या हो रहा है लोगों पर। अगर हम देखें और सोचें कि क्या हम नफरत की बाजार में एक तरह से न्यूज करने आए हैं, दिन पर दिन, रातों रात आप हर प्राइम टाइम प्रोग्राम में लोगों को भिड़ाने आए हैं, खासकर कि वो जो एक तरह से धर्म के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो आप सोचिए, इज दैट व्हाई यू बिकेम अ जर्नलिस्ट? सम ऑफ देम मे वेल बी इवन अवॉर्डेड टुडे, व्हिच इज माय बिगर ट्रबल, because you are then legitimizing and institutionalizing that kind of journalism. I'm sorry to say this, but I must be open, as I said. आप उन
धर्म के ठेकेदारों को अगर अवार्ड देंगे आज, तो आप उसी सिस्टम के में गिल्टी है। ये मैं कहता हूं आज, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है। If night after night, all you do is use your headlines and the power that you have, and as I said, it is an enormous power that you have to divide people instead of building bridges, then you are as guilty and culpable as that person who is peddling this hate propaganda. Therefore, as I said, ये आत्मा का सवाल आपके सामने है. And it leads me therefore to conclude by telling you about Manipur. Only because it is in the news today, not for any other reason. I remember last year when I went to cover the Manipur election, और कोई नेशनल चैनल नहीं था. आज सब जा रहे हैं, पैराशूट कर रहे हैं मणिपुर में. It's a difficult state. You can't parachute into Manipur. It's the most complex and complicated state perhaps that I have seen in this country. But what happened in Manipur is purely ethnic violence bordering on a civil war. This has led to a geographical divide. लोग बट गए हैं. आप इम्फाल वैली में जाइए, कोई कुकी वहां नहीं आ सकता. आप ट्राइबल एरियाज में जाइए, वहां मेते नहीं आ सकते. मणिपुर हैपेंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे. अब हम सबकी निगाहें कर्नाटका के चुनाव पर थी, सभी की. लेजिटिमेटली सो, बहुत बड़ा चुनाव था, सब बड़े बड़े नेता थे, नेता भी वही थे. आप जानिए, जो आज नेता बड़ी बातें करते हैं, सब कर्नाटका में थे जब मणिपुर को 3 और 4 मई को जब वहां हिंसा हुई. लेकिन सवाल ये उठता है, डिड इट रिक्वायर अ वायरल वीडियो 2 months later for us to wake up to the reality of Manipur? जब तक कोई, बहुत कम लोग उस पर डिबेट कर रहे थे. मैंने मई के तीसरे हफ्ते में 2 बार उस टॉपिक पर डिबेट की. तब एक दोस्त फोन करता और कहता है, यार ये जो आप दिखा रहे हैं ये वाकई हुआ है? हाउ कम इट इज नॉट इन द मीडिया सो फार? द फैक्ट वाज that we had not woken up to the reality of Manipur till it required a viral video for us to do it. When a Manipur MLA is beaten up, Manipur MLA beaten up and is virtually in a vegetative state in the national capital, did it require that for us to wake up to the horrors of Manipur? It was almost as if for some news channel, Manipur is not a part of India. यहां नोएडा में अगर ड्रेन पाइप पे कुछ हो जाए तो हम लोग उसको ब्रेकिंग न्यूज करते हैं. मणिपुर में 150 लोग मर गए और आपकी आत्मा नहीं जगती है. यह वाकई इस देश की सच्चाई है. और मैं हिंदी में कह रहा हूं क्योंकि मैं हिंदी चैनल्स को खास करके इस पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि आपकी रीच, आपकी पहुंच बहुत बड़ी है. लेकिन अगर आपकी निगाहें केवल हिंदी भाषिक राज्यों तक सीमित रहेगी तो आप नेशनल चैनल नहीं है. आप अपने आप को कहिए कि हिंदी हार्टलैंड के चैनल है. मणिपुर इस देश का हिस्सा है और आपकी जवाबदेही है कि आप मणिपुर को नाइट आफ्टर नाइट कवर करते. जिस तरह से आप अगर नोएडा या किसी और जगह इसी तरह की ना होती, उससे आपको ज्यादा करना चाहिए था. And that is where, as I said, the crisis of conscience comes. What does your conscience tell you? Does your conscience tell you that you do not want to cover news that you think will not get you TRP? The TRP system is broken. You should ignore it now. That's actually an opportunity. A system broken does not need you to worry about that system anymore. You just need to worry about these 3 C's: commerce, content, but most importantly, your conscience. As I said, in conclusion, TV as a medium is not dead. TV journalism is an ICU because of our own failures. It is an incredibly powerful medium even today. उसकी ताकत बहुत है. हमारी जिम्मेदारी है उस ताकत को सूझबूझ से इस्तेमाल करें, ताकि हम कहीं ना कहीं कह सके हम पत्रकार बने क्योंकि हम डिफरेंस करना चाहते थे, हम कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहते थे. वी वांटेड टू बिल्ड बेटर इंडिया, एक बेहतर भारत बनाना चाहते थे. दैट्स व्हाई वी बिकेम जर्नलिस्ट. अगर हम वो कर पाए तो आई थिंक
TV news journalism will not be dead. Thank you very much. Have a very good day.